हाय एंड वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे शार्क टैंक इंडिया 2 के बारे में। अनुपम मित्तल ने प्राउडली डिक्लेयर किया भारत बिजनेस सीख रहा है आफ्टर रेयर ऑल शार्क डील। शार्क टैंक इंडिया के हर एपिसोड में दिखाया जाता है कि एटलीस्ट एक पिच ऐसी होती है जो एक से ज्यादा शार्क्स का अटेंशन ग्रैब कर लेती है, लेकिन ऐसा रेयरली होता है जहां सारा पैनल डील के लिए हाथ जोड़ ले। In the latest episode of reality show's second season, एक टी ग्लास वॉशिंग मशीन एंटरप्रेन्योर्स ने exactly वही किया। In the episode, they spoke about the problems they faced while creating a unique product. Pitchers धवल और जयेश ने शार्क्स के सामने hot cup of tea present की and asked for rupees 30 lakh for 10% equity with a valuation of rupees 3 crore. Anupam Mittal said that he had met the entrepreneurs Dhaval and Jayesh Nai earlier too. He said that since he knows it takes a lot of efforts for people to come to Shark Tank India, he has started a new project, dreamdeal.me, where he asks new entrepreneurs to make a 1-minute long reel and share what they want to do and why. His team then selects a few and offers them grants without any equity. धवल ने अपनी स्टोरी सुनाई and shared the story of how he came up with the idea of making a washing machine for tea glasses to ensure hygiene is maintained even at tea stalls. And Anupam said भारत बिजनेस सीख रहा है। पिच के कंप्लीट होने के बाद पांचों शार्क्स अमित जैन, पीयूष बंसल, नमिता थापर, अमन गुप्ता, विनीता सिंह और अनुपम मित्तल ने एंटरप्रेन्योर्स को डील ऑफर की। The sharks offered rupees 30 lakhs for 20% equity with a valuation of rupees 1.5 crores. Dhaval and Jayal said yes to the deal. Anupam Mittal said every child would want to do innovation after this deal. And with that, it's a wrap. I'll see you soon with more sizzling updates like this. Till then, keep watching Glam World.